Hare Krishna. Today we will read the story about Varaha अवतार. आज हम कहानी सुनेंगे वराह अवतार के बारे में. He was भगवान विष्णु's third incarnation. वो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे. आइए इस कहानी को पढ़ते हैं. Let's read this story. वराह अवतार. अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर धारण किया. अनंत भगवान. अनंत actually means infinite. So Bhagwan who is infinite or endless. This earth that was drowned in this water of holocaust. Pralay means holocaust, and pralay ka jal is this when there is holocaust and the entire creation is submerged in water. So the earth at the time was drowned in this water, and to deliver it, उद्धार करने के लिए भगवान took the form, धारण किया. धारण करना in our context means to take the form of Varaha. Varaha means a boar. कहा जाता है, it is said, कि एक दिन स्वयंभुव मनु ने, so one day स्वयंभुव मनु बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर, very politely, नम्रता से means very politely, हाथ जोड़कर, folding his hands, अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, said to his father ब्रह्मा जी, पिताजी, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं. जन्मदाता means father. एकमात्र आप ही, you alone are the father of all the जीवास. आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं. You are the one who provides everything for sustenance. जीविका प्रदान करने वाले, everything, the one who provides everything for sustenance or livelihood. हम आपको नमस्कार करते हैं. We give our नमस्कार, our pranam, or we bow down to you. नमस्कार करना is an act basically where you fold your hands, bow your head. So नमस्कार करना is that act. So we bow down to you. हम ऐसा कौन सा कर्म करें? What kind of activity or what kind of कर्म should we do, should we perform, जिससे आपकी सेवा बन सके? So here when we say सेवा बन सके, it translates to something as so that we can get your seva. What activity should we do that we can get your seva? हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए. Please give us permission to perform सेवा. आज्ञा दीजिए. मनु की बात सुनकर, hearing Manu's words, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी said, पुत्र, ओ son, तुम्हारा कल्याण हो. All welfare be for you, all welfare be on you. मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. I am very pleased with you. प्रसन्न हूँ means pleased. क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है, because you asked for my permission. और आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण means surrender. पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए. The sons should worship their father in this form. इसी रूप में पूजा करनी चाहिए. They should worship. उन्हें अपने पिता की आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए. They should respectfully, they should honorably follow the words of their father. तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो. You religiously take care or nurture the earth. यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो. आराधना also means worship. So through यज्ञ worship श्री हरि. प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी. I will be served in a nice way. मेरी बड़ी सेवा होगी through nourishing or through taking care of the citizens or through taking care of all the creation. इस पर मनु ने कहा, on this Manu said, पूज्यपाद, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा.
I will definitely follow your words. किंतु सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है. But जीवों का निवास स्थान, the residence of all the living entities, which is the earth, पृथ्वी, इस समय, at this time, it is drowned in this water of destruction, this holocaust. मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूं? How should I nourish or how should I take care of the earth? पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए. Hearing the condition, हाल means condition, सुनकर, upon hearing, ब्रह्मा जी became very worried, बहुत चिंतित हुए. वह पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे. As he was thinking about delivering the earth, कि उनकी नाक से अचानक, that from his nose suddenly, अंगूठे के आकार का, आकार means form, size of a thumb, अंगूठा is thumb, suddenly a size of thumb, a thumb size, वराह शिशु निकला, a small infant of a boar, a pig came out, a thumb-sized boar came out from his nose. देखते ही देखते, as time passed, वह पर्वताकार होकर गरजने लगा. He became the form of a mountain. He took this form of a mountain and started roaring. ब्रह्मा जी को भगवान की माया समझते देर न लगी. It was not long before Brahma ji could understand Bhagwan's maya, Bhagwan's illusory energy. भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे. घुरघुराहट is a grunting sound, a short, deep, guttural sound that is made by a pig. So hearing this sound, he started praying, he started praising Bhagwan. ब्रह्मा जी की स्तुति से, by Brahma ji स्तुति, वराह भगवान प्रसन्न हुए. वराह भगवान became pleased. वे जगत कल्याण के लिए जल में घुस गए. He entered the water for delivering or for the benefit of the universe, जगत कल्याण के लिए. थोड़ी देर बाद, after some time or after a while, वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए. थोड़ी देर बाद, after some time, the earth that was drowned in this water, he took this earth on his tusks, दाढ़ों पर लेकर रसातल से, from Rasatal. Rasatal is one of the worlds under the earth, below the earth, one of the lower planets. It's the 6th planet below the earth. And he took Rasatal, he took this earth from Rasatal and he came above. उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए. So to put obstruction, विघ्न means obstruction or obstacle, and to put an obstruction or obstacle in his path, महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया. गदा means mace, and आक्रमण करना is to attack. So महापराक्रमी हिरण्याक्ष उनके भीतर ही उन पर, so near him, within him, within the water, जल के भीतर ही, within the water, हिरण्याक्ष attacked him. Mahaparākrami means someone who is very powerful. So Hiranyaksh was very powerful. He attacked him with his mace. उससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया. Chakra is like a wheel. Chakra means wheel. So his anger became so strong, like a wheel. And उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला. So with his pastime, in this way, he killed him, he slayed him. जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, like a lion kills an elephant. जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर, seeing the भगवान who came out from the water, बाहर निकले हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे. ब्रह्मा and others started praying to him with their hands folded. इससे प्रसन्न होकर, being pleased by this,
वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया. So being pleased by this, Bhagwan Varaha, from his hoofs, he stopped the water and put the earth there. Stapit karna is to establish or put in a place. So he put the earth or established the earth there. पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं. We bow down and give our pranams to the one who delivered the earth, Varaha Bhagwan. Hare Krishna.